हिज ग्रेस माधव मुरारी प्रभु जी ज्वाइन कर चुके हैं, तो हम हिज ग्रेस माधव मुरारी प्रभु जी का स्वागत करते हैं बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे। राम राम हरे हरे। तो मैं प्रभु जी का कुछ शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो प्रभु जी रशिया से हैं और प्रभु जी का लीगल नेम है मिखेल मैस्टनी। सो प्रभु जी हिज ग्रेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के शिष्य हैं। तो दीक्षा के बाद उनका नाम पड़ा माधव मुरारी दास। सो प्रभु जी ने अपनी हायर एजुकेशन लॉ में ली है सैट ऑफ लॉ एकेडमी से इन 2005, और 2006 में प्रभु जी ने इस्कॉन ज्वाइन किया और फुल टाइम ज्वाइन किया और प्रभु जी सेवा करते हैं फॉर ह्यूमैनिटी। और प्रभु जी वर्ल्ड वाइड प्रीचर है, तो प्रभु जी जगह जगह सेमिनार्स और प्रोग्राम्स लेते हैं। और प्रभु जी का बेस है वोलोगडा, नॉर्थ रशिया में। और प्रभु जी उधर ट्रांसलेशन सर्विसेज भी करते हैं इंडियन स्क्रिप्चर्स। और करेंटली प्रभु जी येरोस्लावल रशिया में अभी हैं। तो और सो वेलकम प्रभु जी। हरे कृष्णा। Hare Krishna. हरे कृष्णा। Om Gyantimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manokpishtam Stapitam Yena Bhutale Svarupa Kadama Yam Dadati Svapadantikam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sinubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavabhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Welcome to our stages of Bhakti session. Okay, Hare Krishna Prabhu ji. So probably there is a little bit announcement that so सिद्धांत प्रभु जी आज ट्रांसलेशन सर्विस करेंगे। तो सिद्धांत प्रभु जी, over to you. Okay, so welcome on the stages of Bhakti session. आप सभी का स्वागत है आज के स्टेजेस ऑफ भक्ति सेशन के लिए। So we will be discussing this subject matter today and tomorrow. हम आज और कल इस विषय में चर्चा करेंगे। And the verse which we are going to read now, it is from Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, verse 23rd chapter and verses 14 and 15. आज हम चैतन्य चरितमृत मध्य से चैप्टर 23 में वर्सेस 14 और 15 पढ़ेंगे। Adau Shraddha Tatah Sadhu Sangotha Bhajana Kriya Tato Nardha Nivrittihsya Tato Nishtha Ruchistataha Atha Shakti Stato Bhavas Tatah Prema Bhyudanchati Sadakanam Ayam Premnach Pradur Bhave Bhavet Kramaha. In the beginning, there must be faith. Then one becomes interested in associating with pure devotees. Thereafter, one is initiated by the spiritual master and executes the regulative principles under his orders. Thus, one is freed from all unwanted habits and becomes firmly fixed in devotional service. Thereafter, one develops taste and attachment. This is the way of sadhana bhakti, the execution of devotional service according to the regulative principles. Gradually, emotions intensify, and finally, there is an awakening of love. This is the gradual development of love of God, of love of Godhead for the devotee interested in Krishna consciousness. Hare Krishna. हरे कृष्ण। यहाँ पर दिया गया है कि शुरुआत में श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। उसके बाद जो है आप में इंटरेस्ट जागता है प्योर डिवोटीज के साथ एसोसिएशन से। फिर आपका जब इनिशिएशन होता है स्पिरिचुअल मास्टर से, और आप जब रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स
जो ISKCON में 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल दिए गए हैं वो फॉलो करते हैं, उसके बाद हम अपनी आदतों से मुक्त हो जाते हैं और भक्ति में जुड़ जाते हैं। इसलिए हमें अपना टेस्ट और अटैचमेंट जुड़ता है हमारा भक्ति से, और साधना भक्ति हम शुरू कर सकते हैं। उसके बाद हमारे इमोशंस और स्ट्रॉन्ग होते रहते हैं और हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। So everything begins from faith. Faith or Shraddha is the basis of our spiritual life. तो इसलिए शुरुआत भक्ति की श्रद्धा से ही होती है। So here we have the next verse, and the next verse is from Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapter 22, verse 62. The definition of faith is given. और हम श्रद्धा की जानकारी पाते हैं चैतन्य चरितमृत मध्य में चैप्टर 22 से वर्स 62 में। Shraddha Shabda Vishvasa Kahya Sudridhanishchaya Krishna Bhakti Kaila Sarva Karma Kritahaya. So the definition goes like this. Shraddha is confident, firm faith that by rendering transcendental loving service to Krishna, one automatically performs all subsidiary activities. Such faith is favorable to the discharge of devotional service. यहाँ पे श्रद्धा का मतलब दिया गया है कि हम पूरा विश्वास करें भक्ति करते हुए भगवान श्री कृष्ण की तरफ, और जब हम भक्ति करके सर्विस करते हैं तो हम बाकी सारी एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। ऐसी श्रद्धा हमारी सेवा के लिए बहुत जरूरी है। So the symptom is one faithful or not. If one is faithful, it means that spiritual life will be priority number one in his life. अगर आप में भगवान श्री कृष्ण की तरफ श्रद्धा है तो आप भक्ति कर सकते हैं, आपकी प्रायोरिटी रहेगी भक्ति करना। Yeah, dear Anuvadak, you are switching on and switching off the mic. It takes time. You better be always with microphone switched on, okay? Otherwise we spend a lot of time. And in the purport, Srila Prabhupada writes that when one engages in the Lord's devotional service, he is to be understood to have performed all his responsibilities in the material world. यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब कोई भक्ति करता है तो अपनी सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पूरी करता है। Of course, this statement should be understood properly. It doesn't mean that we just started to practice Krishna consciousness and now we have no more obligations to our friends, to our relatives, parents, society, and so on. Just forget about this and practice Hare Krishna. No, it is not about this. लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं उसको हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना है। श्रीला प्रभुपाद जी ये नहीं कह रहे हैं कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की तरफ तो हमारी बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अपनी फैमिली की तरफ, अपने फ्रेंड्स की तरफ, वो सब खत्म हो जाती हैं। This particular statement, this statement is quoted from Bhagavatam 11th canto. This statement is about those who are already beyond the influence of three modes of material nature. श्रीला प्रभुपाद जी उन भक्तों के बारे में बात कर रहे हैं जो भगवत में दिए गए 3 गुणों के ऊपर है। Anyway, Shraddha means that spiritual life becomes priority number one, and this Shraddha one can get by associating with those who already have this mentality, this consciousness. श्रद्धा का मतलब ये है कि आप भगवान के प्रति जुड़ते हैं और आपकी श्रद्धा बढ़ती है शुद्ध भक्तों के एसोसिएशन से।
It is exactly the mentality which we get from spiritual master when we listen to his instructions, and his preaching makes us more determined that spiritual life is something that we really should be engaged in. श्रद्धा का मार्ग और हमारा स्ट्रॉन्ग होता है जब हम स्पिरिचुअल मास्टर की प्रीचिंग रोज सुनते हैं और उनको फॉलो करते हैं. So the role of a spiritual master in one's life is very important, and in this verse that you can see on the screen, it is said, Brahmanda Pramitakona Bhagavan Jiva, Guru Krishna Prasadipaya Bhakti Lata Bija, which means, according to their karma, all living entities are wandering throughout the entire universe. Some of them are being elevated to the upper planetary systems, and some are going down into the lower planetary systems. Out of many millions of wandering living entities, one who is very fortunate gets an opportunity to associate with a bona fide spiritual master by the grace of Krishna. By the mercy of both Krishna and the spiritual master, such a person receives the seed of the creeper of devotional service. यहाँ पर हमें स्पिरिचुअल मास्टर के बारे में बताया जा रहा है चैतन्य चरितमृत में. यहाँ पे दिया गया है जो सब जीव हैं वो अपने कर्म की वजह से पूरे यूनिवर्स में घूम रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे जीवात्माओं में से बहुत ही जो फॉर्चुनेट होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है एक स्पिरिचुअल मास्टर से मिलने की भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, और भगवान श्री कृष्ण और स्पिरिचुअल मास्टर की कृपा से ऐसे व्यक्ति में भक्ति लता बीज प्राप्ति होती है. So this Bhakti Lata Bija, it is exactly means the inclination to have the spiritual life, the inclination to execute devotional service. It is exactly what we get from spiritual master. भक्ति लता बीज का मतलब होता है कि हम स्पिरिचुअल लाइफ भगवान श्री कृष्ण से जुड़ें और स्पिरिचुअल मास्टर की जो भी वो हमें आदेश दे रहे हैं उनको फॉलो करें. And of course, one should value this Bhakti Lata Bija because it is not so easily available in material world, as we can see from this verse. और भक्ति लता बीज को हमें सीरियसली और फॉलो करना चाहिए क्योंकि ये इतनी आसानी से नहीं मिलता है जैसे यहाँ पे दिया गया है. It is written here that before we meet a bona fide spiritual master, we can take many births in different species of life. And then, out of sudden, by great fortune, we get this mercy to meet a bona fide spiritual master and to get Bhakti Lata Bija from him. जैसे यहाँ पे दिया गया है कि भक्ति लता बीज मिलने से पहले हम बहुत सारे जन्म लेते हैं और क्या क्या करते हैं, लेकिन भक्ति लता बीज हमें सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मिलता है और स्पिरिचुअल मास्टर की कृपा से हमें प्राप्त होता है. तो हमें उसके लिए बहुत उसको सीरियसली लेना है. So how it works? It works that first one should meet some Shuddha Bhaktas, some pure devotees in his life, which happens really rare. So it is great fortune to meet these people in our life. सबसे पहला जो स्टेप है वो है एक शुद्ध भक्त से हम मिले जो बहुत ही रेयर होता है. तो ये भक्ति लता बीज का सबसे पहला है एसोसिएशन. So here in this purport to this verse 19151 of Madhya Lila, as you can see, Srila Prabhupada writes, how one can become this fortunate can be seen in the life of Srila Narada Muni. In his previous life, he was born of a maidservant. Although he was not born into a prestigious position, his mother was fortunately engaged in rendering service to some Vaishnavas. When these Vaishnavas were resting during the Chaturmasi period, the boy Narada took the opportunity to engage in their service. Taking compassion upon this boy, the Vaishnavas offered him the remnants of their food.
By serving these Vaishnavas and obeying their orders, the boy became the object of their sympathy, and by the Vaishnavas' unknown mercy, he gradually became a pure devotee. In the next life, he was Narada Muni, the most exalted of Vaishnavas and the most important guru and acharya of Vaishnavas. This paragraph. यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं श्रीला नारद मुनि जी की, जो अपने पिछले जन्म में नारद मुनि से पहले एक जो काम करते हैं उनके बेटे थे। वो बहुत ही बड़े फैमिली में नहीं पैदा हुए थे, लेकिन जो उनकी माता थी वो वैष्णवस को सेवा करती थी, और जब उन वैष्णवों ने देखा कि चतुर्मास के समय में कि जो नारद मुनि हैं वो उनकी सेवा कर रहे हैं, तो उन पे दया करके उन वैष्णवों ने उनको अपना झूठा खाना थोड़ा सा दिया, और जब वैष्णवों का नारद मुनि ने सेवा करी और उनके ऑर्डर्स जो थे उनको फॉलो किया, तो उनको वैष्णवों की कृपा प्राप्त हुई और वो एक शुद्ध भक्त बन गए। और अगले जन्म में, जैसे हम जानते हैं सबको, वो नारद मुनि बने, जो सबसे उच्च वैष्णव हैं और बहुत ही गुरु इम्पोर्टेंट हैं और आचार्य हैं वैष्णवों के। So regarding this Narada Muni case, we can discuss what does it mean, this phenomena of causeless mercy, of so-called causeless mercy. नारद मुनि का हम ये पढ़ के डिस्कस कर सकते हैं कि जो कृपा होती है वो कैसे होती है। Causeless mercy, because as we know, there is a law of karma, and according to the law of karma, each and every action has its consequences. So how it can be so that something we call to be causeless? The cause is always there. There should be always some cause. So why do we call this mercy to be causeless? यहाँ पर जैसे हम सब जानते हैं कर्मा, कि अगर आपका कोई कारण होता है तो उसके बाद आपको रिएक्शन मिलता है, लेकिन जो हमें कृपा होती है हम उसको बिना कारण क्यों कहते हैं? So there is one morning walk. Srila Prabhupada was used to have this morning walks according to his doctor's prescription, and during these morning walks, they were discussing different subject matters, spiritual subject matters, or practical subject and different other practical subject matters with his disciples and followers every morning. And a lot of morning walks are recorded. These audio recordings are available. श्रीला प्रभुपाद जी को डॉक्टर ने बोला था सुबह वॉक करने के लिए, तो जैसे हमारे पास काफी फोटोज भी हैं और काफी हम रिकॉर्डिंग भी देखते हैं, श्रीला प्रभुपाद जी सुबह वॉक्स पे जाते थे अपने सारे डिवोटीज के साथ, और वहां पे वॉक करते हुए सुबह बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कशन होते थे, क्वेश्चंस पूछे जाते थे, श्रीला प्रभुपाद जी आंसर देते थे, तो वहां पे भी ये फिलोसफिकल डिस्कशन हुआ था। So during one of these morning walks, one devotee, one disciple asked Srila Prabhupada, what does it mean to be causeless mercy? And Srila Prabhupada explains that causeless mercy means actually there is a cause, but this cause is not on the side of a receiver of this mercy, but this cause is on the side of those who give this mercy. तो ऐसे ही एक दिन श्रीला प्रभुपाद जी जब सुबह वॉक पे गए हुए थे, तो एक उनके डिवोटी ने उनसे पूछा था कि श्रीला प्रभुपाद जी, अकारणवश कृपा का क्या मतलब होता है? तो श्रीला प्रभुपाद जी ने बताया था कि कारण जिसको कृपा होती है उसके नहीं होती है, लेकिन कारण होता है कृपा करने वाले के लिए। Actually, Srila Prabhupada, he himself, the example of this distributor of causeless mercy, he bestows this mercy on the whole world. He established this ISKCON movement not because that we are so nice people, but because he was asked by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur to preach Krishna consciousness in West countries.
जैसे हम देखते हैं, हम हमारे ऊपर आज कृपा हुई है, हम एक साथ जुड़े हुए हैं भक्ति में, तो ये भक्ति हमारे कारण नहीं हुई है, ये भक्ति हुई है श्रीला प्रभुपाद जी के कारण, जिन्होंने, हमारे पास कोई कारण नहीं था लेकिन उनके पास कारण था, क्योंकि उनके गुरु ने श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने उनको आदेश दिया था कि आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाके प्रचार करें। So, regarding these Bhaktivedantas who gave mercy to Narada Muni, there was a cause on their side, and this cause is compassion. Compassion. और यहाँ पे नारद मुनि पे जो कृपा करी गई थी, उसका जो कारण था वो वैष्णवों में उनकी तरफ कंपैशन था। Everything, all this preaching, any preaching activity begins from compassion. It is the basis of preaching activities. Nagar Sankirtana, book distribution, food for life, classes, lectures, education, whatever. If one doesn't have compassion to people, if one doesn't want his audience to be benefited, then this preaching or so-called preaching will not be effective. भक्ति का कारण बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो अभी गीता जयंती पे होने वाला है, फूड फॉर लाइफ जहाँ पे पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में खाना देता है ISKCON, प्रीचिंग जो प्रभु जी कर रहे हैं, हर चीज के लिए कंपैशन एक बेस है और बहुत ही जरूरी चीज है। So there are some requirements for those who preach and for those who want to get this mercy. इसके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो प्रीच करते हैं और जिनको कृपा चाहिए। Or maybe not requirements, but some qualities that are really helpful to get this mercy. For example, regarding Narada Muni, we can find in this first canto of Bhagavatam, where this story is described, we can find that Narada Muni had particular qualities that helped him to get this mercy. For example, he was obedient, he was gentle, he was not over talkative. और भक्ति पाने के लिए भी कुछ गुण आप में होने चाहिए, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं नारद मुनि में कुछ गुण थे कि उनको जो भी बताया जाता था वो वैसे करते थे, ज्यादा बातें नहीं करते थे, बहुत ही शालीन थे। So here it is written that he became Narada. The boy Narada became the object of the sympathy of Bhaktivedantas by serving them and by obeying their orders. Actually, this mood to be a servant, or at least to aspire to be a servant, is very helpful for spiritual life. यहाँ पर हम देखते हैं कि नारद मुनि पे जो कृपा हुई वैष्णवों की, वो इसलिए हुई क्योंकि वो फॉलो करते थे उनको जो भी बताया जाता था, और बहुत ही जरूरी है सेवा करना। It is the beginning of spiritual life, and actually it is essential for the whole spiritual life, this mood that I want to satisfy my spiritual master, Srila Prabhupada, authorities, seniors, and so on. And in that way, I satisfy Supreme Lord Krishna, because they are related to Supreme Lord Krishna. एक भक्त के लिए बहुत जरूरी है कि वो जाने कि मैं अपने जो भी स्पिरिचुअल मास्टर हैं, जो भी गुरु हैं, जो भी वो बता रहे हैं, उसको मैं फॉलो करूं। अगर मैं उनको खुश करता हूं, अपने गुरु को, तो भगवान श्री कृष्ण भी खुश होंगे, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मेरी जिंदगी में आए। And Srila Prabhupada, he himself wrote a letter to Bhaktisiddhanta Saraswati just maybe 2 weeks before Bhaktisiddhanta Saraswati's departure from this world. Srila Prabhupada wrote him a letter, how can I serve you, how can I satisfy you? श्रीला प्रभुपाद जी ने अपने गुरु श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को मैं एक चिट्ठी लिखी थी और पूछी थी कि मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ। And out of his humility, Srila Prabhupada wrote that there are sannyasis, there are brahmacharis in your Gaudiya Math, and they serve a lot.
they dedicate their time, efforts, and so on to satisfy you. But I am just a grihastha, and I have so many social obligations. So what about me? How can I satisfy you? श्रीला प्रभुपाद जी ने उस चिट्ठी में श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को लिखा था कि आपके मठ में बहुत सारे सन्यासी हैं, लेकिन मैं तो एक गृहस्थ हूँ और मेरे पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कैसे आपकी सेवा कर सकता हूँ. And Bhaktisiddhanta Saraswati, he again repeated the same order. He told that you should preach Krishna consciousness in Western countries in English language. श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने फिर श्रीला प्रभुपाद जी को बोला कि आप जाएं और वेस्टर्न कंट्रीज में बाहर जाके प्रचार करें. So it was again the flow of mercy that Srila Prabhupada has got from Bhaktisiddhanta Saraswati, because to get mercy, it is not some kind of magic when you ask someone to pray for you. Of course it works, but or if you touch someone's feet, it is not some magic or something like this. If we got spiritual instructions, and if we follow these spiritual instructions, then this mercy becomes available in our life because we follow these instructions. कृपा हमें किसी कारणवश ऐसे किसी के चरण स्पर्श करने से सिंपली एक जादू की तरह नहीं मिलती है. इसके लिए हमें सेवा करना बहुत जरूरी है. Hare Krishna. Okay, so we have this chapter from Back to Godhead magazine, which is called Dasha Mula Tattva, the 10 Roots of Gaudiya Vaishnavism. Haribol. अभी हरिबोल आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे एक मैगजीन से गौड़िया वैष्णविज्म. Dasha Mula Tattva, the 10 Roots of Gaudiya Vaishnavism. Have this article. So Dasha Mula Tattva, it is book which is written by Bhaktivinoda Thakur, and there in 10 statements, Bhaktivinoda Thakur, he describes our philosophy, means he describes what actually we believe in Vaishnavism. यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने 10 लाइनें लिखी हैं जो गौड़िया वैष्णविज्म के बारे में हमें बताती हैं. So Shraddha, it is not only about to keep spiritual life priority number one in our life. It is also some system of beliefs. श्रद्धा का मतलब होता है विश्वास करना. Dear Anuvadak, I'm speaking like this, you're translating like this. Why? It's your translation is really shorter than my sentences. Why it goes like this? Huh? Prabhuji, I got instructions to concise. I apologize for this. But it is not difficult for you not to concise. Because I already concised. I'm telling just the essence. You know, it is. I'm telling. There is no water. You know, there is no unneeded details. Everything is concised already. Can you translate just as it is? Is it possible? Yes, Prabhuji. I apologize. Okay, very good. Don't worry. So 10 roots. 10 roots of Gaudiya Vaishnavism. The system of beliefs. It means what? For example, in Christianity, they have so-called symbol of faith. Symbol of faith, it means they have particular text, and in this text it is written what do we Christians believe in. Haribol. जो भक्ति में श्रद्धा के बारे में हम देखते हैं, क्रिश्चियनिटी में एक उनके विश्वास के ऊपर एक किताब है जहां पे सब कुछ दिया गया है. विश्वास
और भगवान से रिलेटेड। So, symbol of faith, it means particular text. In this text it is written what we believe in. And each and every time when someone approaches us and when he is asking us, what do people believe in Christianity, in Islam, in Muslim religion, in Vaishnavism, whatever, those who are following particular tradition, they have to know how to answer, right? So the answer is given here in Dasha Mula Tattva. जैसे क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में जब भी कोई भक्ति की, श्रद्धा की बात करता है तो हमें जवाब उस रिलीजन के टेक्स्ट से, किताबों से मिलता है, वैसे ही गौड़िया वैष्णविज्म का जो भी जवाब है श्रद्धा और भक्ति से रिलेटेड, वो हमें यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर जी की इस 10 सेंटेंस से मिलता है। So here it is written what do we believe in, and actually it is the duty of spiritual master when he gives this Bhakti Lata Bija, he gives particular instructions and he explains how everything works in this material world, and he gives this particular knowledge that is mentioned in this Dasha Mula Tattva book. यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि जो स्पिरिचुअल मास्टर है, गुरु हैं, जब वो किसी को, भक्त को भक्ति लता बीज देते हैं तो वो गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो समझाएं भक्ति लता बीज के बारे में हर चीज, और वो कैसे काम करता है वो यहाँ पे दिया गया है। And it is also very important for us to listen about these things from self-realized souls, because actually each and every of us, we can repeat the same knowledge, we can tell all these things, but when we hear the same message from those who are self-realized or exalted, spiritually exalted, elevated, then this process of listening will be much more effective. ये जो ज्ञान है वो हम किसी से भी सुन सकते हैं, कोई भी इसको पढ़ के बोल सकता है, कोई भी इसको किसी से भी सुन सकता है, लेकिन बहुत जरूरी है कि हम इस ज्ञान को सुने सिर्फ शुद्ध भक्तों से, ताकि हम उसको अच्छे से समझ पाए, ना कि कोई भी जो भी इस बारे में प्रचार कर रहा है। That's why it is written in one of the GBC resolutions that when one joins ISKCON movement, when one is new, he should be encouraged, really encouraged, to read Srila Prabhupada's books, to listen to his classes, because Srila Prabhupada gives this knowledge. He is founder Acharya, our founder Acharya, and he gives this knowledge in the most perfect and pure way. जीपीसी की जो गवर्निंग बॉडी है इस्कॉन की, उसके रेजोल्यूशन में दिया गया है कि जो भी नया भक्त होता है इस्कॉन में, वो शुरुआत में श्रीला प्रभुपाद जी की किताबें पढ़े और उनके लेक्चर ज्यादा से ज्यादा सुने। Even if it sounds like Srila Prabhupada repeats all the same in his classes, anyway, it is important to hear about these basics of spiritual life again and again, and because of this, our consciousness will be gradually transformed. अगर किसी भक्त को शुरुआत में लगता है कि श्रीला प्रभुपाद जी एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत जरूरी है कि हम उसको बार बार सुने और बार बार पढ़ें, ताकि हम खुद शुद्ध हो पाएं। Like it is written in this verse from Chaitanya Charitamrita, 19:152, Malihana kare se bija arupana, Shravana kirtana jale karaye, Sachana. When a person receives the seed of devotional service, he should take care of it by becoming a gardener and sowing the seed in his heart. If he waters the seed gradually by the process of Shravana and Kirtana, hearing and chanting, the seed will become to sprout. यहाँ पर चैतन्य चरितमृत चैप्टर 19 में हम भक्ति लता बीज के बारे में जानते हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लिखा गया है कि जो इंसान जिसको भक्ति लता बीज मिलती है,
उसका उसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। जैसे एक माली होता है, वो एक बीज को पानी देता है, उसका ख्याल रखता है, वैसे ही हमें भक्ति लता बीज का ख्याल रखना है श्रवण सुनने से और चैंटिंग करने से। और ये भक्ति लता बीज आगे जाके फिर बड़ा होता है। So this analogy with the gardener is given here. It means one becomes familiar with ISKCON movement or with spiritual life or with japa meditation process, but it is not the end. One should be stable in this process, and one should also chant holy name and hear about the importance of devotional service. यहाँ पे भक्ति लता बीज प्राप्त करने वाले को बताया गया है एक माली की तरह, लेकिन सिर्फ माली बनने से बात नहीं बनती है, आपको और इसमें स्ट्रॉन्ग होना है, और आप इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, करना चाहिए कीर्तन करने से और चैंटिंग करने से। So here in this purport, Srila Prabhupada writes that sometimes neophyte devotees think that they can continue the Shravana Kirtana process without worshipping the deity, but the execution of such Shravana Kirtana is meant for highly developed devotees like Haridasa Thakura, who engaged in the Shravana Kirtana process without worshipping the deity. However, one should not falsely imitate Haridasa Thakura and abandon deity worship just to try to engage in Shravana Kirtana. This is not possible for neophyte devotees. Basically, it means what? It means that not only, it is not that we can only chant Hare Krishna, we should do something practical also, some practical devotional service. यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो नया डिवोटी होता है, उसको श्रवण कीर्तन सिर्फ नहीं करना होता है, सिर्फ चैंटिंग नहीं करनी होती है, बिना मूर्ति की, जो हम कहते हैं, उनकी पूजा किए हुए। लोग, जो नया डिवोटी होता है, वो श्री हरिदास ठाकुर जी जो सिर्फ चैंटिंग करते थे, उनको फॉलो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ चैंटिंग करने की नहीं है, हमें और भी सेवा देनी चाहिए। Means spiritual life, it is not just one process, just stick to chanting of Hare Krishna or just stick to read Srila Prabhupada's books. It is 6 in 1 or 7 in 1, different processes all together. Like you have this plate with prasadam, this thali, this plate of prasadam, and there are different dishes on this plate. So the same way, one cannot be replaced by another. It goes in system. एक भक्त की जिंदगी में सिर्फ चैंटिंग करना या श्रीला प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ना काफी नहीं है। जैसे एक थाली होती है, प्रभु जी एग्जाम्पल दे रहे हैं, जहाँ दाल होती है, चावल होते हैं, सब्जी होता है, वैसे भक्ति में भी ये सारे गुण होते हैं जो हम सबको फॉलो करने चाहिए, ना कि सिर्फ एक या दो। So let's go back to this Dashamula Tattva. I will read what is written here, and then Siddhant will translate in Hindi. So we have this 10 roots from Dashamula Tattva, means our symbol of faith. यहाँ पर हम वापस आते हैं मैगजीन पे, जहाँ पे हम 10 रूट्स के बारे में जानेंगे, श्रद्धा के, विश्वास के। Yeah. Point number 1. The Vedas constitute the principal scriptural evidence for asserting the truth, and in their essence, they expound the following 9 principles. So the first point is about that Vedas are authoritative source to get spiritual knowledge. Point number 2. Hari, Krishna, is the supreme absolute truth. Point 3. He possesses all energies, material and spiritual. Point 4. He is the ocean of rasa, the flavors of transcendental relationships. Point 5. The living entities, jivas, are his separated parts. 6. These living entities, due to being minute, can become conditioned by the material energy. 7. In their liberated state, the living entities are free of the influence of material nature. 8. Everything is inconceivably one with Abheda and different from Bheda, the Supreme Lord Sri Hari. 9. Pure devotional service bhakti, the highest duty or dharma for all living beings.
then pure love of Krishna Prema is the ultimate goal of life. Hare Krishna. हरे कृष्णा। Okay. यहाँ पर जो हम 10 रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला है जो वेद हैं, वो सबसे पहला स्पिरिचुअल एक बुक है जो सच हमें बताती है, और सच बताने के लिए जो 9 प्रिंसिपल्स हैं, उसमें पहला है भगवान श्री कृष्ण सबसे उच्च सच है। दूसरा है श्री कृष्ण के पास सारी एनर्जीज हैं, मटेरियल और स्पिरिचुअल। चौथा है भगवान श्री कृष्ण एक ओशन है पूरे रस के, जो हमारे ट्रांसेंडेंटल रिलेशनशिप्स में होते हैं। पांचवा है जो जीव है वो भगवान श्री कृष्ण का ही एक पार्ट है। सिक्स्थ है जो जीव है वो क्योंकि बहुत छोटे हैं, वो मटेरियल एनर्जी से कंडीशन रहते हैं। सातवां है जो जीव है वो मटेरियल नेचर की इन्फ्लुएंस से मुक्त हो सकता है। आठवां है भेद अभेद का प्रिंसिपल जो भगवान श्री हरि से आता है, और भक्ति करना सबसे बड़ा धर्म है सब जीवों के लिए। और आखिरी है कि भगवान श्री कृष्ण से सच्चा प्रेम ही एक जीव के लिए अल्टीमेट गोल है। So how spiritual life creates this or gives this inclination to practice devotional service, to chant holy names of Krishna, how he gives this inclination to the disciple or follower? तो कैसे हमें कृपा प्राप्त होती है नाम जप करने की, और कैसे हमें कृपा प्राप्त होती है भगवान श्री कृष्ण से जुड़ने की? He does it by explaining these particular statements. For example, he explains us this statement number 8, where it is written about Bheda Abheda Tattva, Achintya Bheda Abheda Tattva, and he explains our position in material world, that we are the same with Supreme Lord in the sense that he is spiritual and we are spiritual, we're part and parcels of Krishna, but at the same time there is a difference. He is Vibhu, he is great, and we are insignificant, we are Anu. यहाँ पे गुरु ये 10 प्रिंसिपल्स एक भक्त को बताता है। जैसे 8वां है भेद अभेद, हम भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं, हम उन्हीं का एक पार्ट है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण बहुत ही बड़े हैं और हम छोटे से उसमें से बहुत ही छोटे हैं। जैसे श्री हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जैसे श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक गोल्ड माइन की तरह है, एक सोने की खान की तरह है, और हम छोटे से उसमें सोने की तरह हैं। And he explains that if we are insignificant, if we are just part and parcels of Krishna, it means that our duty or our position, our natural position, it is point number 9. Our position is to serve Krishna, to practice, to execute this pure devotional service. It is our natural position. क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही छोटे से अंग हैं, तो हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है, जो पॉइंट नंबर 9 में दिया गया है, वो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना और उनकी सेवा करना। And of course, he himself, spiritual master, he is attracted by this devotional service. It is not that we have one more boss. We had a lot of bosses in this material world during many lifetimes. It is not that we have got one more boss on the sky, in the spiritual sky. Of course, he is the supreme boss, but he is all attractive.
He is very nice. जैसे हम देखते हैं, हम जीवों में कोई ना कोई, हर एक का किसी का कोई बॉस होता है। स्कूल में बच्चों का टीचर होता है, ऑफिस में आप जाते हैं तो हर एक का बहुत ही जन्मों से हम सबके बॉस रहे हैं। तो लेकिन जो गुरु होता है, उनके जो भी आदेश होते हैं वो एक बॉस की तरह नहीं होते हैं। वो बहुत ही शुद्ध भक्त होते हैं भगवान श्री कृष्ण के, और हमें सिर्फ भक्ति में आगे जाने के लिए हमारी मदद करते हैं। In the point number 4, it is written that Krishna, all attractive Krishna, he is the ocean of rasa. He is reservoir of all these transcendental relationships. And because spiritual master is already on this spiritual level, he can relish. He can, by practicing devotional service on his level, he can relish this nectar of these transcendental relationships. जैसे पॉइंट नंबर 4 में दिया गया है, भगवान श्री कृष्ण जो सारे रस हैं, उन सब के ओशन हैं, अनलिमिटेड हैं भगवान श्री कृष्ण। तो वैसे ही गुरु उसको, उस ओशन में जितना भी रस है उसको वो टेस्ट कर सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं। Like we chant in Shri Shri Gurvashtaka, Mahaprabhu Kirtana Nritya Gita, Vadit Ramadyan Manasura Sena, and so on. He experience this ecstatic love for listening, for hearing Gauranga's pastimes. Hare Krishna, Prabhuji, I lost out on the translation. I'm sorry. The connection is not good. Some technical issues. Yes, Prabhuji. Okay, it happens sometimes. Okay, so I'm just saying that spiritual master, he relishes his relationships and devotional relationships with Sri Chaitanya Mahaprabhu, and he likes to hear his glories, like we chant in Gurvashtaka, Mahaprabhu Kirtana Nritya Gita, Vadit Ramadyan Manasora Sena. यहाँ पर जो गुरु है वो भक्ति के सारे रस को महसूस कर सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी की जिंदगी के बारे में जान के, श्री चैतन्य प्रभु जी की जितनी लीलाएं थी उसके बारे में जान के और उसका गुणगान करके। So he experiences this transcendental taste, and there is a phenomena of reflected spiritual emotions. It means that by this moment we are not so much spiritual, but these emotions can be easily reflected in our hearts by mercy of those pure devotees who are nearby. हमें एक शीशे की तरह हमारे ऊपर भक्ति का रिफ्लेक्शन आ सकता है सिर्फ शुद्ध भक्तों के एसोसिएशन से। तो वो बहुत ही एसोसिएशन से आता है, हमारे उसका प्रिंसिपल है। So again, we have this Shraddha, this preliminary faith, and after this preliminary faith should be nourished by Shravanam Kirtanam. जैसे हमें बताया गया था, सबसे पहला जो रूल है वो है विश्वास करना, और विश्वास को हम और दृढ़ कर सकते हैं श्रवण से और कीर्तन से। And this nourishment goes in two forms, Vapu and Vani. Vani means that we get some instructions, and then even if spiritual master is far away, we can meditate on these instructions, and it will be also sadhu sangha, or our association with the spiritual master, even from distance. And there is Vapu. Vapu means when spiritual master or another Vaishnava is presented nearby physically. तो श्रद्धा को हम दो तरीके से और दृढ़ कर सकते हैं। सबसे पहला है वाणी, मतलब हम सुनकर, जो हमारे गुरु हैं उनके इंस्ट्रक्शंस को सुनकर, अगर वो हमारे पास हैं उनको फॉलो करें। अगर जो हमारे गुरु हैं वो हमारे पास भी अगर नहीं है फिजिकली, तो उनके जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसको हम, उस पे हम सोचें उसको हम कैसे फॉलो कर सकते हैं। दूसरा है वापो, एसोसिएशन से शुद्ध भक्तों के हम इस श्रद्धा को और दृढ़ कर सकते हैं। We're going to discuss what sadhu sangha means tomorrow, and
So again, this sadhusanga, it is not only about physical presence of a Vaishnava before us. Of course, it is very beneficial. Of course, each and every time when this, how to say, this association, when people are nearby, not online like we do now or by correspondence, but physically together in one room and to discuss something, it is very beneficial. It is very good. We should not miss these opportunities if we have these opportunities. कल हम चर्चा करेंगे शुद्ध भक्त के एसोसिएशन की जरूरत के बारे में. आप जानेंगे, हम सोचेंगे, समझेंगे इसके बारे में कि एक शुद्ध भक्त की एसोसिएशन कितना जरूरी होता है कि हम उनके साथ फिजिकली, आजकल हम क्लासेस कोविड की वजह से ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन जब हम एक शुद्ध भक्त के साथ एसोसिएट करते हैं उसको हम कल डिस्कस करेंगे. But at the same time, when we read books written by Shuddha Bhaktas, by pure Vaishnavas, when we read Srila Prabhupada's books, it is also sadhusanga. We should not underestimate the importance of this association with Srila Prabhupada through his books. लेकिन साधु संग जो है वो हमें श्रीला प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ने से भी मिलता है. ऐसा नहीं है कि हम किताबों को सिर्फ किताबें पढ़ना समझें. श्रीला प्रभुपाद जी की जब हम किताबें पढ़ते हैं तो भी हमें साधु संग मिलता है. Anyway, we will be discussing Sadhu Sangha tomorrow. Hare Krishna, thank you for your kind attention. हरे कृष्णा. हम कल साधु संग के बारे में और आगे चर्चा करेंगे. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की सेशन अटेंड करने के लिए और ध्यान देने के लिए. Hare Krishna. हरे कृष्णा. Okay, so what should we do now? If we have time for questions, I can answer. I have time also. I don't know what is the schedule. What is supposed to be now to be done? Hare Krishna. Prabhuji, I will just seek instructions. What is the schedule? Yeah. Okay, so Prabhuji, we can go for some questions. Okay. So सभी devotees आप hand raise कर सकते हैं if you have any questions. So Prabhuji, I had a question. Yeah, so, please. So Prabhuji, my question is that is it necessary that when we got the that we get the seed of devotional service only after initiation? As we can see, Prabhuji, we are following some spiritual activities, we are chanting, we are reading books. So isn't it possible that we have got that seed of devotional service before the initiation? Okay, so is Hindi translation needed for this question? हरे कृष्णा. तो प्रभु जी का सबसे पहला सवाल है कि क्या भक्ति लता बीज प्राप्त करने के लिए इनिशिएशन जरूरी है, या जब हम अभी भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, तो हम समझें कि हमारे पास भक्ति लता बीज प्राप्त हो गया है? Very interesting question. Well, seems to be that this Bhakti Lata Bija is not directly related with initiation. Tricky question, actually. Tricky question. You know, when we're speaking about initiation, usually this term Bhajana Kriya, which is one of the stages of devotional service, usually they relate Bhajana Kriya with the time of initiation. Means, technically speaking, Bhajana Kriya starts when one is initiated. ये टेक्निकली अगर देखा जाए तो इनिशिएशन भक्ति लता बीज से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन भक्ति करने के लिए कीर्तन के लिए इनिशिएशन बहुत ही जरूरी है. उसका पहला स्टेप होता है भक्ति क्रिया, कीर्तन क्रिया. So initiation means what? Initiation means that it is one of the stages in our relations with spiritual master. It is not that this relationship starts just
at the moment of initiation. No, before that, before initiation, somehow we become attracted by spiritual master, means relationships are there, and following of some instructions are also there. इनिशिएशन हमारा जो रिलेशन है हमारे गुरु से, भगवान श्री कृष्ण से, उसका एक कड़ी है. कड़ी में बहुत सारे, जैसे सीढ़ी में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो उसमें से एक सीढ़ी पे चढ़ने का स्टेप है. लेकिन हम ऑलरेडी इनिशिएशन से पहले गुरु से, भगवान श्री कृष्ण से उनकी तरफ आकर्षित हैं. So initiation basically means that spiritual master takes responsibility for us, for our spiritual advancement. He takes this responsibility before Krishna. इनिशिएशन का अगर हम देखें तो उसका मतलब ये है कि जो हमारे गुरु हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से हमें जोड़ने के. भगवान श्री कृष्ण के सामने गुरु बोलते हैं कि अब बैक टू गॉड हेड मैं इनको लेके जाऊंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भक्त. And also why we say that Bhajana Kriya begins only when one is initiated, because the definition of Bhajana Kriya is devotional service which is performed under guidance on bona fide spiritual master. Means before initiation he didn't took this formal responsibility, official responsibility. Means, of course, informally, unofficially, he could help if you have relationships even before initiation. Of course, help it there, but his commitment, his obligation that he takes in the moment of initiation is not still there, and your vows to follow four regulative principles and to chant holy names 16 rounds are also not there. One officially takes this these obligations at the moment of initiation. That's why they related together, initiation and Bhajana Kriya. भजन क्रिया और इनिशिएशन बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है एक दूसरे का. इनिशिएशन का मतलब होता है कि जो गुरु है वो ऑफिशियली बता रहे हैं आपका जुड़ाव, आप जुड़े रह सकते हैं एक गुरु से पहले से, लेकिन इनिशिएशन के बाद जब आपका इनिशिएशन हो जाता है तो आप ऑफिशियली जुड़ जाते हैं गुरु के साथ. चैंटिंग के 16 राउंड करने, आप 4 रेगुलेटिव रूल्स फॉलो करने लगते हैं, वो आपकी लाइफ का एक प्रॉपर ऑफिशियल पार्ट बन जाता है. But before initiation takes place, what happens? One becomes attracted by this particular spiritual master, or maybe by few spiritual masters, and then he hears two different spiritual masters, and then he is inclined to listen to one of them and to follow one of them, and means he is attracted, means this process of Shravanam Kirtanam is there, this process which actually meant to nourish Bhakti-Lata Bija. Yeah. लेकिन हो सकता है इनिशिएशन से पहले ही हमारा आकर्षण हो एक गुरु की तरफ या बाकी गुरु की तरफ हमारा आकर्षण होता है. हम थोड़ा थोड़ा रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स भी फॉलो करते हैं, थोड़ी सी भक्ति भी करते हैं, थोड़ी सेवा भी करते हैं, लेकिन भक्ति लता बीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे हमने पढ़ा था एक माली की तरह, श्रवण कीर्तन करने के लिए इनिशिएशन जरूरी है. So it means that if he is attracted, likely something he already has got in this heart, right? Even before initiation, something he has got. But is it Bhakti-Lata Bija or not? Well, it is. The research should be done. The research, maybe we have particular quote in Srila Prabhupada's books where it is written that that Bhakti-Lata Bija is related to initiation and not before. Like Bhajana Kriya takes place after initiation. I have to do some research. But anyway, even if we don't call it Bhakti-Lata Bija, anyway, some attraction is there and relationships are there. क्या ये सच में भक्ति लता बीज है हमारा आकर्षण एक गुरु की तरफ? इसको हमें और जानना है. प्रभु जी ने बोला इसको और हम पढ़ेंगे, इसके बारे में और हम डिस्कस करेंगे. श्रीला प्रभुपाद जी की किताबों से भी हम
इसके बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि ये जानना कि ये भक्ति लता बीज एक्चुअली में है या सिर्फ आकर्षण है। कुछ तो है जिस वजह से आपको आकर्षण हुआ है, लेकिन वो आकर्षण भक्ति लता बीज है या कुछ और है, उसके बारे में हम और चर्चा करेंगे। So it is the most natural situation, the most natural process when there are some relationships with spiritual master, and then this aspiring disciple is initiated. It means that these particular relationships are formally, how to say, there is a ceremony, formal ceremony that formally registered, registered. Initiation एक Yeah. Yes, please translate. Do you remember what I'm saying? Yes, Prabhuji, I remember it. It Okay, is good, a formal good. registration process. Initiation एक registration process है, आप formally एक गुरु से जुड़ जाते हैं. But I thought much more. I thought much more. Okay, so it means what? Yeah, so you see, just let's take an example. Just two aspiring disciples are sitting on the same Agnihotra. You know what Agnihotra means, right? Agnihotra, the ceremony initiation. They are sitting, and one of them, he already has some relationships, and actually we can maintain these relationships by Shravanam Kirtanam. Means he has these relationships, and this initiation is just one of the stages in these relationships, and another one just takes him formally, and it is not that he knows a lot or he knows sufficient about this spiritual master. Just take an example, just two people sitting and they have different consciousness. जो इनिशिएशन का एक प्रोसेस होता है, उसमें अग्नि सूत्र में आपको बिठाया जाता है. वहां पे जो भक्त बैठा होता है, दो अगर बैठे हैं, भक्त बैठे हैं और गुरु बैठे हैं कॉन्शियसनेस सेम, लेकिन वो अलग अलग लेवल पे दोनों का कॉन्शियसनेस है. हो सकता है उनमें श्रवण और कीर्तनम करते हैं वो, लेकिन उसको आगे बढ़ने के लिए वो कॉन्शियसनेस को आगे बढ़ाने के इनिशिएशन करते हैं. So that's why devotees, they sometimes say that actual initiation, real initiation happens in the heart. Means that first one gets this understanding that actually this guru is my guru. He will protect me, save me, and help me on the spiritual path. And of course, this process should be done consciously. There is ISKCON disciple course where they explain how to choose guru, what are the qualities, how disciple should behave. But anyway, one should be conscious when he chooses spiritual master. जो ISKCON के भक्त हैं वो कहते हैं आपका पहला इनिशिएशन आपके मन में होता है कि जो मेरे गुरु हैं वही मेरी मदद करेंगे, जो मेरे गुरु हैं वही मेरा मार्गदर्शन करेंगे, जो भी मेरे गुरु मुझे बताएंगे मुझे उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है. तो वो मन से होता है इनिशिएशन कि गुरु की तरफ हमारा आकर्षण. और डिसाइपल कोर्स भी होता है इनिशिएशन से पहले, जिसमें कोर्स में हर तरीके से बताया जाता है एक भक्त को कि आप कैसे अपने गुरु को चुने, कौन आपके गुरु होने चाहिए, कैसे आप आगे भक्ति में बढ़ेंगे. I mean that, of course, this actual initiation happens in the heart in the form of this feeling that he is actually my spiritual master. But this feeling, it should not be blind feeling. This feeling should be in knowledge. It should be in knowledge. We should know how to, at least how to distinguish between bona fide spiritual master and bogus spiritual master, for example.
जो दक्षिणा का इनिशिएशन का पहला मन में हमारा होता है, वो एक अनुभक्त की तरह नहीं, लेकिन हम उसको जानकारी के साथ, पूरी नॉलेज के साथ हम समझ पाए कि ये ही हमारे सच्चे गुरु हैं, ना कि कोई नॉर्मल गुरु हैं। यही सच्चे सच्चे गुरु हैं जो हमें मार्गदर्शन भगवान श्री कृष्ण की तरफ कर सकते हैं। Hare Krishna. Do we have more questions, or does it answer on your question or not? जी प्रभु जी, I got my answer. Okay, Gaurang. Prabhuji, Hare Krishna. Okay, Hare Krishna Prabhu ji. Hare Prabhu ji, I Krishna. don't think there are much more questions. Okay. So thank you very much, Prabhuji, for today's lecture. So we would thank Prabhuji by loudly chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you, Prabhuji. Thank you. Thank you for your attention and invitation. जी प्रभु। ओके, सो हम सिद्धांत प्रभु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, क्योंकि प्रभु जी ने काफी शॉर्ट नोटिस पे ट्रांसलेशन सर्विस के लिए प्रभु जी उपस्थित हुए, तो हम प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्णा, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I Thank you. apologize, Prabhuji, if there was any mistake from my side. My sincere apologies. Well, I don't speak Hindi. I cannot understand if you have mistake or you don't have, Anyway, thank you, Siddhant. Prabhuji, Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna. ओके, सो हरे कृष्णा। सो कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, जैसे कि अभी हमारा एक भगवद्गीता कोर्स स्टार्ट होने वाला है। तो हमारा ये भगवद्गीता कोर्स आज से ही कल से स्टार्ट होगा, 7 PM डेली वो होगा। तो जो लेवल क्लास डिवोटीज हैं, जो लेवल क्लास डिवोटीज नहीं है, उनको तो वो जरूर से ये सेशंस ज्वाइन करें, क्योंकि भगवद्गीता का मन चल रहा है, तो हमको पता चल गया कि हम क्या क्या हमें फॉलो करना है और भगवद्गीता के बारे में हमको जानने का मौका मिले। तो आप वो सेशन भी अटेंड कीजिएगा। और कल हमारा सेशन होगा कंटिन्यूअस, हिज ग्रेस माधव मुरारी प्रभु जी ही लेंगे इस सेशन भी। तो स्टेजेस ऑफ भक्ति के ऊपर होगा, तो आप जरूर से कल का सेशन भी मिस मत कीजिए। तो हरे कृष्णा, हमें सेशन एंड करते हैं बाय अगेन लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू डिवोटीज। हरे कृष्ण।